हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं ग्लेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी और शायद एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है फूड पैकेजिंग एंड सर्विसेज प्रोडक्ट, जैसे कि फूड कंटेनर एंड पेपर स्ट्रॉ। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं इनके चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल जी से और जानते हैं क्या कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। दोस्तों, चैनल को शायद आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। चले अंदर। हेलो सर, कैसे हैं? Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। Yes, and welcome to our factory. थैंक यू सो मच। बड़ा सुंदर आपका फैक्ट्री अरेंजमेंट है। Yes. तो शुरुआत से हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? We have two kind of products. अच्छा, One is basically to pack the food for delivery, and the second product is for the food service. Mainly, we make straws made from paper and compostable plastic, or used as a food service product. अच्छा, तो आप मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप फूड कंटेनर बनाते हैं। Mainly, फूड कंटेनर Yes. बनाते हैं और फूड स्ट्रॉ भी बनाते हैं। food straw भी बनाते हैं. Straw is made from paper as well as from compostable plastic. कंपोस्टेबल प्लास्टिक मतलब? कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया, तो अच्छा। नॉर्मल प्लास्टिक से स्ट्रॉ बैंड है अभी इंडिया हाँ, में। हाँ। इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड वाइड बैंड होते जा रहा है। हाँ हाँ, इसकी जगह अभी कंपोस्टेबल प्लास्टिक चल रहा है, विच इज कंपोस्टेड इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, so that does not cause any damage to the environment, so that is allowed to be manufactured in India. ओके। सो हम लोग को आप क्या क्या दिखाने वाले हैं? हम आपको 4 सेक्शन दिखाएंगे हमारे यहाँ पर। mainly 4 section? 4 सेक्शन है Okay. हमारे यहाँ पर। एक है थिन वॉल फूड कंटेनर, अच्छा, द सेकेंड इज टू मेक पेपर स्ट्रॉज, ओके, third is to make the PLA straws, compostable straws, Okay. and fourth we are manufacturing U-shaped straw for the beverage industry. Okay. So I'll show you all the 4 sections today. ओके। सो लेट्स गो एंड Let's go. तो ललित, जैसे आप बता रहे थे, यहाँ पे कितने मशीन है अपने? हम लोगों के यहाँ पर टोटल 52 इंजेक्शन मशीन हैं। Okay. All machines are all electric machines. ओके, Range मतलब ऑटोमेटेड मशीन? All automatic with robots fitted, ओके and range is from 140 ton going up to 500 ton. ओके। तो कैपेसिटी वाइज कितनी कैपेसिटी आप We प्रोडक्शन can process 600 metric ton every month. एवरी मंथ 600 मेट्रिक टन ऑफ कंटेनर, क्योंकि हम Food सिर्फ अभी container. कंटेनर देख Right, रहे हैं। right. राइट। तो ये कंटेनर्स में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो कौन सा रॉ मटेरियल है? This is a polypropylene material. We are importing mostly from Abu Dhabi, Dubai. वो मोस्टली फ्रॉम अबू Abu धाबी। Dhabi. ओके, तो वो रॉ मटेरियल है, फिर उससे कंटेनर निकलता उससे है। container. तो क्या आप हमको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे? Yes, I will show you from the beginning. ओके, Raw material जब हम लोग यूज करते हैं, that is put into this crate, and from crate it is auto loaded into the hopper. ओके, From hopper it goes into the injection Okay. screw. From injection screws it is fed into the mold. ओके, Mold may take the shape of the mold, and then robot after cooling takes out the product, stacks it, and only operation is manual is packing of the product. तो हम लोग क्या जाके देखें वहाँ पे Yes, कैसे yes, होता है? please come. तो सर, हम ये देख पा रहे हैं ये रॉ मटेरियल है, तो ये प्रोसेस थोड़ा हमको समझाएंगे? Yes, this raw material is polypropylene mixed with the Okay. black master batch. The black is the master batch. Black is the master batch. Okay. And from here it is loaded into the hopper of the machine. So it is auto loaded. Auto loading. अच्छा, ठीक है। Only we have to put manual operation is put the raw material here. Okay. This also we are going to centralize, अच्छा, and from the centralized it will come through the pipeline into the each machine. तो इनपुट जो हर एक मशीन के लिए अलग अलग हो रहा है वो नहीं होगा? वो नहीं होगा फिर. अच्छा, Then it comes loaded into the hopper, हाँ, injected into the screw of the machine. ओके। यहाँ पे हीट दिया जाता यहाँ पे हीटिंग हो रही है. है। हाँ, हीटिंग से then it is injected into the mold. ओके। तो ये हीटिंग के बाद वो मोल्ड में इंजेक्ट हो रहा है. ओके, इंजेक्शन के बाद में then there is a cooling cycle. ओके, After cooling the product takes the shape of the mold. ओके,
then from the mold, then the robot is just taking out the product from the mold. So this is done automatically, right? Yeah, this is automatic. The whole robot. process is automatic. Automatic, and then it is tracked here with counting. Okay. We don't have to even do the manual counting. Okay, the counting is done. Also automatic. Okay. Then our person is only doing the manual packing. Okay. So the packing process is only Only manual, manual. otherwise ये. Otherwise it is all अगर हम वो black batch नहीं मिलाते तो ये white में Right. निकलेगा. Then it would have been natural transparent. Natural transfer. We will go to the section where we manufacture paper straw. Paper straw जहाँ manufacture Yes. करते हैं वहाँ चलते हैं. So let's go to the paper manufacturing segment. I mean Yes. paper straw. Yes, that is on the upper floor, first floor. First floor. Okay. Yes. हाँ तो हम लोग अब सेकंड फ्लोर में हैं. अब आप क्या दिखाने जा रहे हैं हमको? यहाँ पर हम लोग पेपर स्ट्रॉ बना रहे हैं. पेपर स्ट्रॉ. Yes. अच्छा. And paper straws can be starting from 3.8 ID. 3.8. 3.8 millimeter in the Okay. diameter, Okay. going up to 11.2 in the diameter. अच्छा. So we can make any size, any length between this in the diameter range. Okay. And this is made This is made fully from of paper. There is no coating, 100% paper, which is again compostable. अच्छा. So, तो ये प्रोसेस आप दिखा रहे हैं ये अभी. प्रोसेस अभी हम दिखा रहे हैं कि Okay. how these machines are basically very advanced machines, can Okay. go up to 100 meter per minute. 100 meter per Per minute. minute. Okay. The process of making paper starts with printing. You can see that sometimes we require different kind of printing on the paper. Okay. So it starts with printing, then we are slitting into scrape. Okay. After slitting, then the paper is brought into the reels Okay. onto this machine. Okay. This station is automatic changeover station, Okay. where the feeding of the reel takes place, and when one reel finishes, the other reel automatically takes over. तो मैं वापस से एक बार आपसे समझना चाहूंगा, ये जो लेयर है इसी से ये बन रहा है, राइट? Yes, this is a paper strip Okay. put into the form of reels. कितने स्ट्रिप्स ऐसे There are चलते हैं? total 3 layer. Three layer. Paper straw में हम लोग 3 layer use करते हैं. Okay. The top layer is 60 GSM. Okay. Middle and bottom layer is 120 GSM. Okay. And this station is automatic changeover station. Okay. जहाँ पर कि आपकी एक रील खत्म होती है तो सेकंड रील ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर. ये कैसे होता है? ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज ओवर होता है. अच्छा. ऑटो सेंसर लगे हुए हैं. Okay. जैसे ही रील खत्म होने का है कि दूसरा रील उसमें ऑटोमेटिकली स्टिकिंग होगा, चला जाएगा. तो ये कंटिन्यूअस चलते रहता इसे है. कंटिन्यूस चलता रहेगा. देयर इज नो इंटरप्शन. देयर इज नो इंटरप्शन. No. तो ये रील से यहाँ से यहाँ से 3 स्टेप जा रही है. आप देखिए, एक, 2, 3 स्टेप. तीन. दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, दिस इज मिडिल लेयर, दिस इज द बॉटम मोस्ट लेयर. ओके. तीनों का विड्थ लेकिन सेम ही है. तीनों का विड्थ अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द डायमीटर. व्हाट डायमीटर? डायमीटर के बेसिस पे इस इसकी तीनों का width अलग-अलग होती है. ओके ओके. So these reels, then we have to put the glue onto the reel. यहाँ पे ग्लू लग रहा है. Glue लग रहा है. Now this अच्छा. glue is automatic gluing system, and this is imported from Germany. ओके, दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी. Germany. अच्छा. Now तो ये सारे जो स्ट्रिप्स जा रहे हैं इसमें अब ग्लू लग चुका है. glue लगना, ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर ये gluing स्टेशन है. ये देखिए आप, glue gun है, glue हाँ. gun है. अच्छा. तो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है. 2 जगह glue हाँ, इसमें ग्लू है. राइट. Okay. तो ये glue लग के जब यहाँ से जाएगा, then it will go to the rolling station. ये रोल हो रहा है. ये रोल हो रहा है. ओके. तो ये भी सेट होगा कि कैसे क्या रोल होगा किसके. Yes, this is decided based on the speed by the PLC control. सो दिस इज आल्सो पीएलसी कंट्रोल. Yes. ओके ओके. तो यहाँ पर तीनों लेयर को रोल कर रहे हैं. आप देखिए तीनों लेयर रोल हो रही हैं. हाँ. एंड देन इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द कटिंग स्टेशन. सो ये तीनों लेयर जो रोल हो रहे हैं, ये हाँ. रोल होके, अच्छा इसमें फिर ये ऐसे ये आगे आगे बढ़ते जा रहा है. ओके. दिस मस्ट बी अबाउट 2 मीटर. दिस मस्ट बी 2 मीटर. एंड यहाँ पर ये 9 स्टेशन कटिंग स्टेशंस हैं. ये 9 कटिंग स्टेशन. Right. 1 2 3 4. ओके एंड दिस 9 कटिंग स्टेशन, इसका विड्थ हम एडजस्टेबल है. ओके तो लेंथ वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. ओके. सो यहाँ पे आप डायमीटर कस्टमाइज कर सकते हैं, लेंथ कस्टमाइज कर सकते हैं, बोथ वी कैन कस्टमाइज. और इसका लुक कैसा होगा ये भी आप That कस्टमाइज also कर we can सकते हैं. customize. Mostly people want white. Okay. Then some people want printed, and in printing में भी हमारे पास में बहुत सारी designs हैं. There are more than 15-20 designs. So according to customer need, we can customize the printing also. Okay. Some customer even need branding. We can do branding also. On this On this we can straw. do. Yes. अच्छा, तो अब मेरा प्रश्न ये है कि इसका जो पेपर है ये कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? पहले हम लोग जर्मनी से लाते थे. जर्मनी से. Yes. But German prices have gone up very much due to energy crisis. राइट. So now we have started in buying the paper from local source. So you are buying the paper from local source. From India. We are buying from 2-3 sources. Okay. Plus we are also importing from Indonesia. Indonesia. Right. The prices there are The comparatively cheap. prices are more or less same from Indonesia and India. So it's good that we are sourcing it from India. Yes. So यहाँ से ये प्रोडक्ट निकलने के Then बाद after cutting station, it is coming out to the conveyor and it is
go to the bin. ओके, एज आई कुड सी ये कट हो जा रहा है। ये कटिंग होके निकल रहा है, Cutting कटिंग यहीं होके- से कटिंग हो गया, कटिंग यहीं से हो गया, इसको जस्ट पुशिंग हो रहा है। ओके, ये पुशिंग हो रहा है, पुशिंग होके कटिंग हो जा रहा है यहाँ। Right. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे स्ट्रॉज ऐसे कटिंग होके ये बाहर आ गए हैं और ये रेडी है टू सेल, राइट? Right. पैकिंग, No, पैकेजिंग no, no, बाकी no. है। After this, we have to do second operation Okay. because this is still wet. The Oh, glue this is wet? Yes. Ah. So we have to dry it and then pack it. So you have to dry. Yes. Is that a manual process? No, that you have a automatic microwave dryers. ओके, माइक्रोवेव ड्रायर्स ऑटोमेटिक है, वहाँ पे ड्राई वहाँ होके पर देन dry इट इज होके- रेडी फॉर then it is ready for packing. ग्रेट। सो वी हैव सीन द कंटेनर फर्स्ट, देन द पेपर स्ट्रॉ, व्हाट नेक्स्ट? Next, I will show you how to make the PLA straws, which is compostable straw. ओके That is a substitute for PP straw. ओके, So we'll go सो to that स्ट्रॉ section. कैसे मैन्युफैक्चर, बट द रॉ मटेरियल इज डिफरेंट। No, that raw material is totally different than the paper straw. ओके That is totally bioplastic based raw material. ओके, बट द यूसेज इज सेम। Usage is same. So let's go. So we are moving to bio. We are moving to PLA straw making, which is a biocompostable Okay. straw. So straw made of biocomposable material, right? yes. So let's go. विष्णु जी, ये वाले सेक्शन जो है इसमें हम लोग कंपोस्टेबल स्ट्रॉ बनाते हैं। कंपोस्टेबल स्ट्रॉ। Compostable straw. Okay. Compostable straws are made from polylactic acid, which is normally called PLA, PLA. and it is a bioplastic. It is from the renewable resources. Okay. It must be very costly. It is very expensive compared to the normal polypropylene. It is almost 4 times expensive. 4 times expensive. Four But times still you have expensive. to do. We have to do because government has put a regulation, barred all the single-use plastic to be banned. Okay. So see, as per government regulation, you have to use. Yeah, we have that. All the companies have to use only this. Okay. So ये यूज होता है स्ट्रॉ बनाने में। ये use होता है। अब आप हमको दिखाएंगे कैसे स्ट्रॉ बनाते Right. हैं। Now I will show you the first step of making straw. Okay. The raw material is again sucked, auto-loaded into the hopper, Okay. and this material is hygroscopic, Okay. so it requires heating. Okay. This is a heater. Okay. So after heating, because the moisture is there, so moisture needs to be removed from the material. Okay. Then again the same process, like in the injection, it is a screw, heated screw. Okay. From the heated screw, it is extruded through the die. अच्छा, the straw is coming out, right? The straw is coming out and it is going through the cooling bath, water bath. So it automatic it is getting cooled. Yes, it is getting cooled, and then this is the hull of unit. In the hull of unit, it is cooled. अच्छा. क्या है कि वहाँ से उसको there is no force to pull it. Okay. So this is providing the force to pull the straw. Okay. Then it comes the automatic cutting machine. Okay. Oh, ये ऑटोमेटिकली कट कर रहा है। Yes, it is cutting. यहाँ पे भी लेंथ कस्टमाइज Yes, we can adjust the length, and then what we are making is basically angle cutting. अच्छा, You can see so that when they अब have वो to उससे pierce, pierce हो जाए। piercing के लिए they require the angle cutting. And this is then used for, I mean, drinking. Yeah, or this is anything. for this straw is little lower diameter. This Okay. is used for like samosa packs and other things. For fruity, we have to use a bigger diameter straw. Okay, so for fruity the diameter is big. Bigger. Okay. So this is how the straw is made. This is the first step of making the straw. Okay. Then the second step, I will take you how to make the U-shaped straw. U shape. Yes. So friends, we have seen first is how the container is made, then पेपर से स्ट्रॉ कैसे बनता है, थर्ड ये बायोडिग्रेडेबल उससे कैसे ये स्ट्रॉ बन रहा है प्लास्टिक का, वो देखिए। अब हम लोग देखेंगे यू स्ट्रॉ कैसे बनता है, यू शेप स्ट्रॉ। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। प्लीज लाइक द चैनल इफ यू हैवंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू। विष्णु जी, अभी आपने जो सेक्शन में खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर U-shaped straw बनाते हैं. यू शेप स्ट्रॉ। Yes. अच्छा, And this is used by the beverage industry for their carton packing. ओके, In the carton packing के लिए U-shaped straw, उसमें ऑटोमेटिक स्टिकिंग होता है अच्छा, ताकि कस्टमर को एक पैक के साथ में एक स्ट्रॉ मिल जाए. हाँ. And he can pierce it and करेक्ट drink that drink. करेक्ट। Now, ये फाइनल प्रोडक्ट है। this is the final product which is coming out from this machine. We are standing in front of the machine. It is called bending machine. बेंडिंग मशीन। Right. ओके, बेंडिंग मशीन में स्ट्रेस को बेंडिंग किया जा रहा है. अच्छा, यहाँ पे खाली बेंडिंग हो रहा Only है। बेंडिंग हो रहा है. अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं ये बेंडिंग हो ये गया, बेंडिंग हो गया. यही ऑटोमेटिकली फिर ये Right. ऐसे घूम ये जाएगा। सबसे पहले बेंडिंग हुआ आपका. अच्छा, तो ये पहले बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग होने के बाद में कमिंग टू द हॉपर Hopper. ऑफ द पैकिंग मशीन. ओके दिस इज ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन. ओके, यहाँ पर कि यहाँ सीलिंग हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है. From the- अच्छा। और ये पैक ऐसे ही
आप ऐसे ही हम सेल करते हैं। हम ऐसे ही अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं। हाँ। वो उनकी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में यहाँ स्लिटिंग कर करके एक एक के साथ में एक एक चिपका देते हैं। अच्छा, लेकिन तो- आप ये ऐसे रोल फॉर्म में राइट, हम इसको ऐसे रोल फॉर्म में दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैकिंग हो रहा है। हाँ हाँ पैकिंग के बाद में यहाँ चेकिंग हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। चेकिंग के बाद में यहाँ पर कार्टून पैकिंग हो रहा है। अच्छा, ये कार्टून पैकिंग है। ये कार्टून ऑटोमेटिक है ये भी। ओके, ये भी ऑटोमेटिक है। अच्छा। जैसे ये फुल हो जाएगा, इसमें काउंटर है, जैसे फुल हो जाएगा ये स्लिट कर देगा, इसको हटा लेगा, नया कार्टून रख देगा। ग्रेट, सो ये रेडी टू डिस्पैच नाउ है। इज रेडी फॉर डिस्पैच। वो फिर उनके यहाँ पर एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। ओके ललित जी, आपने हमें 4 सेक्शन दिखाए आपके यहाँ पे, 4 वर्टिकल्स अगर मैं बोलूँ तो। Right. 4 वर्टिकल्स दिखाए। Right. कंटेनर, Yes, फिर पेपर स्ट्रॉ, right. फिर प्लास्टिक Compostable straw. कंपोजेबल स्ट्रॉ, And then you shape बेंडिंग, straw. हाँ, यू शेप स्ट्रॉ। ये तो हुई पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Right. अब थोड़ी मैं आपसे बिजनेस कंपनी को समझने के लिए थोड़े आपसे नंबर्स की अगर मैं बात करूं, कितनी कैपेसिटी है आपके पूरे टोटल ये सारे चारों प्रोडक्ट्स में? हमारे चारों प्रोडक्ट में देखिए हम बताते हैं, एक एक सेक्शन वाइज बताते हैं। TWC सेक्शन फूड कंटेनर में वी कैन प्रोसेस 600 मेट्रिक टन पर मंथ। ठीक है। पेपर स्ट्रॉ वी कैन प्रोसेस अबाउट 110 मेट्रिक टन पर मंथ। ओके एंड PLA स्ट्रॉ वी कैन मेक अबाउट अनदर 125 मेट्रिक टन पर मंथ। ओके, सो ये टोटल में अभी कितनी कैपेसिटी में आप रन कर रहे हैं? अभी फूड कंटेनर हमारा फुल कैपेसिटी में चलता है। कंटेनर। पेपर स्ट्रॉ अभी वी हैव पिक्ड अप द कैपेसिटी। ओके दिस सेक्शन इज जस्ट इंस्टॉल्ड, ओके so we are picking up the capacity. I think in another 3 months time we'll be running at full capacity. ओके, सो व्हाट इज द करंट रेवेन्यू? Current revenue last year we achieved a revenue of 94 crore, 94 crore, so near about 100 crore. 100 crore. This year we are targeting for about 140 crore. And how much scope is And there? then next year we are targeting for 200 crore. That is the maximum you that can is the achieve. maximum we can achieve from the existing installed capacities. So 200 crore in next 2 years is your target. Right. Currently you are at 100 crore Right. approximately. Right, very correct. And what is the EBITDA if you can share with our EBITDA, viewers? our average EBITDA margins are around 15%, Okay, and PAT is around 3 to 5%. 3 to 5%. Yeah. So which comes around 3 and 3.5 crore. Yeah, yes, So that is your PAT. right. So out of the 100 crore of the revenue that you have, how much is through export and domestic? We are last year we exported about 60% of So our 60% is Yes, exported. yes. So majority of your revenue comes through export. Right. Okay. So But- which are the countries you cater to? We are exporting to USA, Okay. all European countries, Okay. Australia, Okay. some Middle East and some African countries. Okay. So these are the countries where you are exporting, Yeah. and 40% is domestic. But Okay. with this expansion program is mainly for the domestic market. So in the coming years, we expect our export content in the total turnover will come down to 40%. Okay. So export will come down. But in the totality, it will grow. Totality. I mean, Yeah. absolute terms In it may absolute- grow, but but percentage wise Percentage it will come down. So there is a common question which I always ask on my factory walkthrough to the promoters is what is your vision for the next 5 years? Yeah. I mean, what will this company do after it achieves 200 crore? Yes, turnover? my next plan for expansion is to make paper cup Okay, and to make molded paper products. okay, And they are finding easy application for substitution for the for the plastic which have been banned. okay, So we are going to go into those projects. They are a little high capital investment projects. okay. So we are under the planning stage for that. So paper plates and all Not paper plates. It is basically molded paper product. Molded It paper. can be in any shape. in any shape. They can be plates. It can be bowl. It can be even trays. There are many. There are more than 20-25 type of sizes and Okay. shapes available, Okay. which are selling. So going ahead, are you moving slowly out of plastic and moving into? Yes, we will have a portfolio where plastic and paper will find equal importance. Okay. Because paper is also equally used in the packaging, food packaging and service products. So what is the capex you are looking at? We will plan for the molded paper product will be about, you can say, 70 to 80 metric tons per month. So कितना रुपया आपको चाहिएगा कैपिटल चाहिए? It requires an investment of about 60 crore. 60 crores. How you are planning to? That we are talking with various banks, Okay. as well as we are looking for private equity. So you are ready to dilute your equity? Yes, we are more preferred towards private equity. Okay. Because we are already high debt company. So Okay. I don't want to leverage the debt on the higher side anymore. Okay. So you want to reduce the debt and you want to dilute your equity. Right. Currently the shareholding is total shareholding is with the Yes, promoters. right. It is 100%. So with there us. is no outside public There is no shareholding. outside, there is no public holding, there is no outside holding. Okay. So I guess what about going public? Going public is a I mean, yes, right the now we are size- not equally, size is small. Yeah, size is small. We are not really tuned to the public
I mean, we are not sizable to go public. So Okay. private equity suits better than the going public. Great. In the next stage, after going for private equity, maybe when they achieve a turnover 300 to 400 crore turnover, then we are sizable size to go public. So what I understand is that it is a scalable business. Yes. Now let me talk little bit about the margins. थोड़ा margins के बारे में बात करते हैं. आपका raw material crude है, I mean plastic Right. Plastic or paper. प्लास्टिक और पेपर है. Now प्राइस रॉ मटेरियल का बहुत फ्लक्चुएट करता है. Right. पेपर में तो अभी देखे एनर्जी क्राइसिस और Yes, यूक्रेन वॉर की वजह से everywhere it is going up, going down. So, अभी जो आप मार्जिन इबिटा में कर रहे हैं ये इज इट एट द हाईएस्ट लेवल और यहाँ से स्कोप है Actually, आपको लगता है आने वाला भी? हम लोगों का प्राइसिंग पैटर्न अलग है. अच्छा. Whatever monthly pricing becomes, we pass on to the customer, whether it is going lower or going higher. So everything is passed on to the customer. Yes. So there is no impact on our profitability. So is there any scope that your margins would increase in the future? See, when we will increase our turnover, automatically the margin will increase because the fixed cost will be spread over a larger volume. So the margin expansion would come from that. So it was nice talking to you, जी. Thank you Yes. for the time. हमने आपके कंपनी के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ समझा और आपने भी अपने सारे शेयर्स किए. It was wonderful talking to you. Thank you for the time. Thank you very much, Vishnuji. It was nice meeting you and thank you for your time. My pleasure. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. दोस्तों, हमने ललित जी से बात की और जानने की कोशिश की कि कैसे फूड कंटेनर और पेपर स्ट्रॉ मैन्युफैक्चर होते हैं और उनके बिजनेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश की. दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए. बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही नए नए अनलिस्टेड कंपनीज और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं लेके आपके समक्ष हाजिर होऊंगा और सही समय में आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए. प्लीज़ स्टे विथ अस. सी यू अगेन. बाय.